नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पहला सुख निरोगी काया। Community radio is a medium that gives power to the excluded and marginalized, a voice to the voiceless. Community radio is a bridge that connects all its members, overcoming divides and helping build a more united society. It also helps keep alive the language, dialect, oral and folk traditions of the community, making it an undertaking that is both joyful and creative. Through this film, we will explain to you the steps involved in setting up and running a community radio station. This involves several courses of action that run parallel. These are the application and licensing process, the setting up of the studio and procuring equipment, and most importantly, the process of involving the community in the endeavor, and building their capacity as volunteers who will work as reporters and coordinators, as contributors of content, and as avid listeners. We will travel to 4 different places around the country where UNICEF is supporting NGO partners to set up community radio stations. These stations are at different stages in the process, and this will enable us to understand the various steps involved. The first step in setting up a community radio station is applying for the license. NGOs who have been registered for 3 years, educational institutions, and Krishi Vigyan Kendras are eligible for applying for licenses under the Government of India's policy. Very briefly, here is the path taken for a community radio application and licensing process. The application form and the details required are to be completed by the applicant NGO and submitted to the CR cell of the Ministry of Information and Broadcasting. The license application includes the coordinates of the site of the community radio station as well as a map of the area reached by it. পাঁচটা সম্প্ৰদায়ৰ লোক বাস কৰে আৰু এই সকলো লোককে যাতে আমি কমিউনিটি ৰেডিঅ' কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় মাইজান বৰচকীয়া অঞ্চলত এটা কমিউনিটি ৰেডিঅ' কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। Land or an existing building can also be leased from the local panchayat, as in the case of Lalitpur, or a local government body. In the case of Radio Dhimsa in Koraput, Orissa, the land belongs to Sova, the NGO that runs the station. With the location decided, the application form can be submitted. After which, the Standing Advisory Committee for Frequency Allocation, that is SAGFA, checks for details of range, existing wireless operators in the proposed area, available frequencies, etc. This is followed by the SAGFA clearance. Assuming that all is in order, the frequency is allocated. This is the frequency on which the station will eventually broadcast. The signing of the grant of permission agreement with the applicant is the penultimate step in the licensing process, and the station is required to broadcast within 3 months of its signing. But before that, the station must apply for a wireless operating license within the next month. देवेन जी नमस्कार। सभी श्रोताओं के लिए नमस्कार। मैं सीताराम पंथू और मैं ग्राम बड़वार से आया हूँ। While the application and approvals process is underway, there are other preparatory processes that are also on track. The first process to be put in place is the CNA, or the Communication Needs Assessment Research. This will define the station's listenership and also other information needs. What are the cultural barriers in developing communication? How the community are more inclined to listening to radio programs? What are their pastimes, and how many languages are being spoken by the community residing within the targeted area? The application process happens over a period of time. This time can be effectively utilized for identifying community reporters from the community.
From a group of volunteers, a selection of suitable candidates is made, and from these, a handful will go on to become community reporters and field supervisors. Village reporters are also identified who will provide leads for possible story ideas to the field supervisors. We took up a pool of trainees just to be sure that the knowledge that they acquire is spread across a large number of people. A cohort is created which can be put to use as and when required. And we did not want to restrict it to a few numbers because we are talking about building communities' capacities in taking up innovative media innovations, you know. फास्ट जो ट्रेनिंग थिला हमरो सिटा सर्वे उपरे थिला जे एक्चुअली कोरापुट रे लोक माने केमती इन्फॉर्मेशन पाउचंदी ता उपरे ट्रेनिंग थिला तापरे हमर टेक्निकल ट्रेनिंग हैला जे ट्रेनिंग नेला परे हमें केमती कंप्यूटर चलेबा तापरे केमती एडिटिंग करबा। ट्रेनिंग के दौरान आराम से सब कुछ सिखादा है जिसे आज हम उन्होंने कंप्यूटर चला रहे हैं और खुद अपने बलबूते पे खड़े हैं और कार्यक्रम बना रहे हैं। While the training of the community reporters and the licensing process is underway, the identified site is readied for the station and the necessary equipment is procured and installed. When planning for equipment for a community radio station, there are several factors that we have to keep in mind. The first and foremost is durable equipment which will withstand tough weather and local conditions like dust. The second is of course redundancy, which means that if equipment fails, we should be able to continue our work without suspending it. And the third of course is that you have to keep in mind a very efficient and small budget, because in most cases community radio stations have comparatively small budgets. After every training session, the volunteers are given time to practice their newly acquired skills. And as they get more familiar with the various aspects of radio, they move from theory to actually making programs. Once the program is made, it is played back to groups of people to gauge their response and understanding. नमस्कार, मेरा नाम उमा यादव है। मैं ग्राम बरखेरा की हूँ, आपई की क्षेत्र की, और ललित लोकवाणी में सामुदायिक रिपोर्टर के पद पे हूँ और कुछ कार्यक्रम बनाते हैं। आज वही क्या कार्यक्रम लेके हम यहाँ पर आए हैं, तो सुनिए हमारा आप कार्यक्रम। This is called narrowcasting and is an important learning process for the reporters as they get used to the idea of receiving feedback and using it to improve programming. आयोडीन नमक जरूर खाना, बीमारी दूर हो जाएगी और बुद्धि का विकास भी होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपने गांव के बेन भैयन को और बताएं नमक के बारे में। तो गांव के लोगों के लाने भी हमारे जो कार्यक्रम है वो पसंद आ रहे और हम जा रहे उन लोगों से और उनकी राय ले रहे और उनसे बातचीत कर रहे और बातचीत के दौरान अन्य विषय निकल के आ रहे जो उनकी मतलब समस्या के विषय हैं और पंचायत के जो मुद्दा आ रहे भी सब चीज़ें पे हम कार्यक्रम बना रहे हैं। To oversee every aspect of the station's functioning, a managing committee is formed. Community radio station जो community बा जो लोगों को पे तैयारी करा जाए, सेही community रो किसी विशिष्ट लोगों ही तार managing committee रे रुहंते। मैनेजिंग कमिटी दायित्व है से माने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को दिशा निर्देश करते, उपदेश दियंती एवं विभिन्न समय से माने जो सब नीतिगत निष्पत्ति रही से सब नीतिगत निष्पत्ति से मैनेजिंग कमिटी जो माने सब सभ्य थांती से माने ग्रहण करते। We have followed all the steps required in setting up of a community radio station, right from identifying land for the building to identifying and training people for making programs and running the station. Now all that is needed to go on air is the license, and once that is issued, the station can begin broadcasting, and usually with a lot of fanfare. As the station goes on air, the community radio team has more immediate worries. कम्युनिटी रेडियो जो है आज अपना ब्रॉडकास्ट तो कर चुका है और इस ब्रॉडकास्ट को हमें लगातार आगे चलाना है, लेकिन इसके लिए इसको आगे चलाते रहने तक के लिए हमें जो है सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज तक तो
अब तक अभी जो है यूनिसेफ सपोर्ट कर रहा है और कुछ दिनों तक आगे भी करता रहेगा, लेकिन एक उनका समय दायरे के बाद में जब वो बंद कर देंगे तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसको हम चलाएंगे कैसे, इसके लिए आय का स्रोत क्या होगा। We already have a provision for broadcasting 5 minutes of advertisements in 1 hour of broadcast. So I guess that would be one major source of income. Number two, people who go for recordings to outer stations, outer sources, would outsource this content to different locations to get them recorded. We'll do that at local level. अंधेरे को रोशनी में परिवर्तित करने के लिए एक अनूठा और सराहनीय प्रयास। Finally, the moment comes for which the teams have worked so hard. The launch of the community radio station. This is a radio for community and by community. गांव वाले की जो भी समस्या होंगी तो उनकी समस्याओं को सुनूंगी और यहाँ पर धड़कन रेडियो में लाके उनको बताऊंगी, उनकी समस्याओं का समाधान करवाऊंगी और उन लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि हमारी समस्याएं वहाँ तक पहुँची और सभी लोगों ने सुनी और उसका समाधान हुआ। आज जब मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है और इससे मेरी एक पहचान बनेगी, मैं कहीं से भी निकलूँगा तो हाँ ये संतोष शर्मा वही आवाज़ है। ये एक हमें ताकत दे रही है, तो वो बातें अपनी मजबूती से रख पाएंगे हमें। The launch is not just about celebrating the culmination of the hard work already put in, but it is also about ensuring that the entire community has a sense of ownership in the station. घर में पैसे नहीं रखना चाहिए, कोई घटना घट जाए, घर में आग लग जाए, चोरी हो जाए तो बैंक में खाता खुलवाओ, बैंक में अपने पैसे जमा करो। ये में से ललित लोकवाणी से सीख मिली। जी नरेगा के बारे में प्रोग्राम आया था, मतलब वो मनोरंजन के द्वारा भी सुनाते हैं, उससे हम लोग बोर भी नहीं होते हैं और हम लोग प्रोग्राम भी अच्छा लगता और जानकारियाँ भी हम लोगों को मिलती। तो वहाँ लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाया करती थी, लेकिन हमने नैरो कास्टिंग के द्वारा, श्रोता समूह की बैठक के द्वारा उन लोगों को कहा कि आप अपनी बेटियों को पढ़ने भेजिए, तो लोगों ने समझा। नैरो कास्टिंग के द्वारा लड़कियों को बाकायदा पढ़ाने भेजने लगे हैं। कम्युनिटी रेडियो पिछले 2 वर्षों से जो है अपना पूरा सफ़र करते हुए आज लॉन्च जो कर चुका है, लॉन्च की तरफ आज हमारा बढ़ चुका है और इसी के साथ में हम जो है इस सफ़र को पूरा करते हुए हमें कई सारे सबक मिले हुए हैं और इन सबकों के साथ में आगे भी जो हमें लगातार उसको ब्रॉडकास्ट करते रहना है। इसके लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए हमारी पूरी सारी टीम अपने पूरे जोश के साथ तैयार। This diverse group of men and women form a brigade of volunteers for change. They are part of a movement that will bring help and hope into the lives of many. Community Radio, a movement that sings out across various regions, in many languages, in one voice.